हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कोडेड विद सार्थक। आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर यू गाइस। इट्स डिफरेंट फ्रॉम कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट्स मोर फोकस्ड ऑन द compensation that you get, and there is a very specific component, ESOPs. So we will be discussing a lot about what is ESOP, how should you calculate, what are the implications on it, टैक्स implications क्या हो सकते हैं, what are the benefits of it having, क्या terms and conditions generally companies में होती है, and how you can get maximum benefits out of it. So let's start with the video. So ESOPs. So before starting with the video, I think you can take this information, all this with a pinch of salt, because all these policies vary from company to company. But we will discuss about generic policies which are like somewhat similar across all the companies and what these mean. So basically, ESOP is employee stock ownership plan. कैसे एम्प्लॉय के पास स्टॉक्स का ओनरशिप आ सकता है, दैट इज दिस प्लान इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो ESOPs is not RA, like RSUs and ESOPs are very different terminology, so don't confuse it with that. Also, ESOPs is not equity, ESOPs is not stock. So whatever you have, stock market है, stocks मिल रहे हैं, it is not stocks. First let's clear that. So basically ESOP is that agreement between the company and you, where they agree that we will grant you some stocks at this price, and this is the option that you get to purchase this stock at this price. That option is that ESOP, basically that letter to purchase that stock. So for example, let's say मेरी कोई कंपनी है XYZ, उसके स्टॉक्स की वर्थ होगी 20 रुपीज आज की डेट में, बट आई कैन गिव यू ESOP एज पार्ट ऑफ माई एम्प्लॉय एग्रीमेंट. लेट्स से मैं आपको 100 स्टॉक्स दूंगा एट प्राइस ऑफ 10, बट मैंने आपको स्टॉक्स नहीं लिए, मैंने आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया. आई हैव जस्ट कमिटेड दैट इफ यू वांट टू परचेज 100 स्टॉक्स यू कैन बाय 10. ये एक ऑप्शन मैंने आपको अवेल करा है. ये ऑप्शन एक लेटर होता है, एंड दैट लेटर इज बेसिकली व्हाट वी जनरली रेफर टू ESOPs. ओके, कि आपको कंपनी ने ESOPs दिए. ओके, सो कंपनी आपके कॉम्पनसेशन में बहुत बड़े बड़े ESOPs लिखती है. इट कुड बी समथिंग लाइक 10 lakh, 20 lakhs, 40 lakhs, and generally startups which are not publicly listed, they offer you ESOPs. They do that so that companies, like the person is somewhat connected with the company, they have some stakeholder, I would say, ownership into the company, so that they are motivated enough. Also, it's a way to buff up your compensation in a way so that you also feel motivated enough that हाँ मेरा भी पैकेज 50 lakhs का है, 1 crore का है, as compared to the people who are getting offers from Microsoft, Google and Facebook. So this is also one of the way of doing that. Couple of basic terminologies that come to ESOPs are like what is stock options. So basically stock options, भाई simple terminology में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि जब भी आप खरीदना चाहेंगे स्टॉक्स, this amount of stocks you can purchase at this price, and that's that. So basically जो स्टॉक ऑप्शन है, दैट ESOPs has that price also mentioned कि अगर लेट्स से मार्केट में कुछ भी XYZ प्राइस हो सकता है, आपको किस प्राइस पे खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस. कि आपको फिक्स हो जाता है कि आई विल लेट यू बाय माई स्टॉक एट ₹10 और ₹20 और ₹100. दैट इज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ दैट ESOPs. एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी और डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक्स बेसिकली, क्योंकि आप यहाँ पे कोई स्टॉक ले नहीं रहे हो, इट्स जस्ट एन ऑप्शन. इफ यू try to avail that option, let's say in future after 3-4 years into the company you want to avail that option, you get that you have to pay, let's say आपने 100 stocks लेने थे at ₹10, you have to pay 1000 rupees to the company just to get that option. हो सकता है उस टाइम कंपनी के एक स्टॉक की ही वैल्यू 20 रुपीज हो गई है, सो दैट आपने जिस टाइम पे 1000 रुपीज में खरीदा, अगर आप मार्केट के थ्रू खरीदते तो मे बी आपको 2000 रुपीज पे करना पड़ता. सो यू आर एबल टू एक्वायर दैट स्टॉक at a I would say lower price, and at the same time if you want to sell that market at ₹20 you make a profit of 1000 rupees. So basically that 1000 rupees is your profit, if I have to say in simpler terms. That is why ESOPs are not pure stocks or not pure profit. It has this asterisk against it कि आप जिस रेट में बेचेंगे और जिस रेट में आप खरीदेंगे, वो जो डिफरेंस है, that is your profit and not the final rate where you at which you sell it. But और क्या ऑप्शन और क्या चीज इसमें इन्वॉल्व होती है. सो जनरली व्हाट कंपनी डू, व्हाट दे डू इज दे ऑफर यू अ वेस्टिंग साइकिल. वेस्टिंग साइकिल क्या होता है, आपको हो सकता है दे विल से लाइक these 100 stocks we will give you, but हम आपको 1 साल में नहीं देंगे, हम आपको 4 साल में देंगे. Why a company do that? Because they also want to safeguard their interest. They also want to keep you for longer time. Like if you are staying with a company for 4 years,
definitely you might have got 1-2 promotions there. You are in a senior leadership role, you are much more indulged in that company, you know company very well because आप 4 साल अपनी जिंदगी के उस कंपनी को दे रहे हैं. So for that they know कि हाँ you should have that stock worth. So ऐसा होता है, for example you are committed some at least x 100 stocks, let's say x stocks whenever your time of joining, but they get vested is in they are available to you for like exercise this option to purchase the stock. वो जो option है वो आपको vesting cycle पे मिलता है. So for example generally what company do is they give you like 25% of your stocks at the end of first year, and then they give you maybe monthly or quarterly or on yearly basis above that. So for example some companies do that 25% मिल गया and next year में आपको 25% मिलेगा and next year में 25% मिलेगा. So you get 25 stocks every year, or you get 25 like whatever you like say आपको 1000 stocks promise हुए थे तो you get 250 stocks every year, something like that. I'm sorry, I said you will get an option to have the 250 stocks every year. That is in that vesting cycle. Sorry. So not the actual stocks, but stock options get vested, and you get a grant later generally after joining a company in 30, 60 or 90 days, which has all these things. What is the stock options consist, like what are the number of stocks that you can buy, at what price, which is a strike price, and third, what is the validity of this option. So एक option आपको मिला है आज, let's say आपने Apple ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल like any company you have joined and they have given you option कि आप उसे 10 रुपए में खरीद सकते हो, पर आप उसे 100 years तक नहीं रख सकते क्योंकि एट दैट टाइम कंपनी के लिए वो अनबियरेबल हो सकता है कि उस प्राइस पे आपको वो स्टॉक्स प्रोवाइड करवाना. मे बी XYZ रीजन से, लीगल रीजन हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. So generally they have a validity. It could be 1 year, it could be 5 years, it could be 10 years. Generally they have 10 years, but do remember to read this document very carefully कि आपकी validity क्या है. Because अगर validity over हो गई, in case you leave the company, in case you like terminate your like employment at that firm in any way, और आपके 4 साल complete हो गए, like what is the rest of the amount of period you have with you to exercise this option as in exercise this option to purchase stock at that strike price. So ये grant rate हो गया, आपका vesting cycle हो गया, and last is tax implication. So how does tax work on it? So ऐसा होता है generally, these are two things. आपको stocks नहीं मिले तो आपको जब ESOPs ऑफर होते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता. That is straightforward. But after some time when you try to exercise this option, generally आप उस टाइम पे एक अमाउंट पे कर रहे होते हो, and to purchase this stock it could be something like आपने 100 स्टॉक खरीदे 10 रुपीज पे, तो आपको वो स्टॉक्स मिल गए उस पे 1000 रुपीज में, राइट. सो उसके ऊपर आपको एक टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकता है क्योंकि आपको एक ग्रांट मिला है, एक रिवॉर्ड मिला है कंपनी की तरफ से, दैट इज टैक्सेबल. आपको ESOP टैक्सेबल नहीं थे क्योंकि आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा था अब तक, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते तो दैट इज टैक्सेबल. एंड ऑल्सो since you have got this like bulk amount, क्योंकि that is dependent on some X rate जो कंपनी डिफाइन करती है. फॉर एग्जांपल कंपनी का उस टाइम पे स्टॉक का रेट था 20 रुपीज और आपने 10 रुपीज पे परचेज किया, तो जो 1000 रुपीज का डिफरेंस था उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ टैक्स कम्स इनटू फॉर्म ऑफ व्हेन यू ट्राई टू सेल दैट स्टॉक. तो आपने फर्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज करा, आपने स्टॉक्स को एक्वायर करा, आपने 100 स्टॉक्स ले लिए. अब आप 100 में से जितने भी स्टॉक्स बेचेंगे उस पर स्टैंडर्ड इक्विटी चार्जेस, स्टैंडर्ड इक्विटी रेट्स और आपका इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा. So that's it. So what these are the tax implications. I hope you get all the information that is required for ESOPs and understanding them. So interesting fact, अभी आपने सुना होगा Freshworks ने अपने IPO निकाले, they were 500 करोड़पतिज, right? So this is the power of ESOPs कि आज अपने ESOPs लिए, but whenever the company might get public, they might blast it with their stock price और share price. और वहाँ पे अगर आप उस टाइम पे very low amount में, let's say आपने 10 रुपीज में खरीदा and the actual stock price was something like 1000 रुपीज, तो आपको सीधा 100% बेनिफिट हो गया, like 100 times का बेनिफिट हो गया. So that is the power of ESOPs. You get it at a very low price and you can sell it at a very, very high price. So that's it. I hope you all like this video. And before ending with this video, let's thank the supporter of this channel, Newton School. So guys, what is Newton School? Newton School एक Edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offer from these top tech companies. एंड उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता.
they have very good offerings with this course. Live classes, industrial projects, mock interviews, and personal mentoring. I will put the link in the description, and I suggest you all to check this out and explore their courses.